Good morning, students. Today in this lecture we learn the determination of blood clotting time. This test is used to check the qualitative measurement of clotting factors which are used in the intrinsic pathway. इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं क्लोटिंग फैक्टर चेक करने के लिए जो कि इंट्रिंसिक पाथवे में यूज़ होते हैं एंड दीज फैक्टर्स आर फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th and 12th. All these factors are involved in the intrinsic pathway and we use this test to check the qualitative measurement of these pathway. And you can say we do this test for checking the proper functioning of the platelets factor, and the basically principle behind this test is when blood come in contact with the glass surface it will form a clot. जब ब्लड किसी ग्लास सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ये क्लॉट फॉर्म कर देता है. We do this test by two methods. First is capillary method and another one is tube method. In capillary method you will use the capillary tubes, and in the tube method, second method, in tube method we use the test tube. Now in first method the requirements are sterile lancet, capillary tube, cotton, spirit and stopwatch. The normal limit for this capillary method is 4 to 9 minutes. And we learn the procedure with the help of this diagram. And for the procedure, first of all, in first step, you will collect the capillary blood with the help of lancet pricking. आप lancet prick करके blood जो है capillary tube में collect करोगे and immediately start the stopwatch. जैसे ही आपने blood collect कर लिया capillary tube में, आप stopwatch start कर दोगे. In second step, you check the formation of clot by breaking the capillary tube after 2 minutes. 2 minutes के बाद आप capillary tube को एक साइड से ब्रेक करके देखोगे कि क्लोट बना है या नहीं बना. And in third step, you will continue breaking of capillary after every 30 seconds. हर एक 30 seconds के बाद आप कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके चेक करोगे कि क्लोट फॉर्म्ड हो रहा है या नहीं. देन इन लास्ट फोर्थ स्टेप, एज सुन एज द क्लोट स्ट्रिंग अपीयर्स, स्टॉप द वॉच एंड नोट द टाइम. जैसे ही वो क्लोट बन जाएगा वहाँ पे फिब्रिन फॉर्मेशन होगी. इफ़ देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ क्लोट इन द कैपिलरी ट्यूब देन you will see a fibrin thread like structure. वहाँ पे आप क्या करोगे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, थ्रेड बनता हुआ दिखेगा. तो यू कैन से द ब्लड हैज स्टॉप, और यू कैन से द ब्लड नाउ इन क्लॉट फॉर्म. नाउ एंड लास्ट fifth step, you can see there is a thread like appearance in the capillary tube. Now if this test show the clot within time limit 4 to 9 minutes, then you can say all the clotting factors which are used in the intrinsic pathway are properly worked, or if they are not properly worked, then you can say there will be any disorder in your clotting factors. Now another method in which we use the test tube, this method known as Lee-White method, and the principle behind this method is same. When blood come in contact with the glass surface, it will form a clot. ये क्लोट बना देता है जैसे ग्लास सरफेस की टच में आता है. The requirements for this test
are sterile syringe, cotton and spirit, test tube, stopwatch and water bath. इन सभी इस टेस्ट को करने के लिए हम सिरिंज की हेल्प से करेंगे। सिरिंज में ब्लड लेके उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, फिर उसके बाद हम क्लॉट फॉर्मेशन चेक करेंगे। इन दिस लीव वाइट मेथड वी विल कलेक्ट द ब्लड with the help of syringe, and now you will pour the test tube with the blood and check the formation of clot in the test tube, and this also known as test tube method. And the procedure for this methods are: in first step you will collect the 2 ml of venous blood, and after collecting the blood immediately start the stopwatch as soon as blood enters the syringe. जैसे ही blood syringe में enter किया आपने stopwatch start कर देनी है। Now fill the 2 test tube each having the 1 ml blood and place them both tube in the water bath. आपने दोनों ट्यूब्स में 1-1 ml ब्लड ले लेना है, क्योंकि आपने 2 ml ब्लड कलेक्ट किया था फ्रॉम वेन। अपने वेन से 2 ml ब्लड कलेक्ट किया है, आपने क्या करना है, अब 1 ml एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और 1 ml दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। नाउ दोनों टेस्ट ट्यूब्स को यू विल प्लेस इन दी वाटर बाथ हैविंग द टेम्परेचर 37 डिग्री। आपने उस दोनों टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ में डालना है जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री होगा। नाउ इन थर्ड step, remove one tube after 3 minutes and tilt at an angle of 45 to see whether the blood has clotted. अब आपने क्या करना है, एक रिमूव करना है आपने एक टेस्ट ट्यूब को वहाँ से और उसे टिल्ट करके देखना है कि आपका ब्लड क्लॉट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन 3 मिनट्स के बाद। एंड द टिल्टिंग एंगल विल बी 45 degree. And now in fourth step, if blood has clotted, return it to the water bath, examine it at 30 seconds interval to see if it has clotted. अब आपने ब्लड क्या करना है, अगर ब्लड नहीं क्लॉट हुआ तो आपने एवरी 30 सेकेंड्स के बाद ब्लड को थोड़ा सा टिल्ट करके देखना है कि वो क्लॉट हो रहा है या नहीं हो रहा। देन इन लास्ट stop if blood has clotted, then immediately stop the stopwatch and note the time. If the time within the limit for this test is 5 to 12 minutes, then you can say the patient has normally blood clotting time. If it is beyond the normal limit, then you can say your platelet clotting factors are not properly functioned. And we use this test for the intrinsic clotting factor, for the measurement of intrinsic clotting factors. Thank you.